I hope you all are fine and you all can see me and you all can hear me. Please give a thumbs up. Are we live, guys? Wait a second. Yeah, we are live now. I think. Yeah, we are live now. Wait a second. So, guys, welcome back to the Unacademy, the largest online learning platform. I am Shiv Virmani, an Indian medical student and author of Pharmacology, and in this session, we'll be studying the drugs that are used in the GI tract. So, in the GI tract, you encounter many disorders: peptic ulcer, hyperacidic condition, vomiting, diarrhea, constipation, and all. So we'll be discussing them, and we'll be discussing the drugs that are useful to treat these type of disorders. And but we have already uh, done a deep review, deep session. This will be a revising marathon session, and so yeah, okay. So welcome back, guys. And welcome back. And here in this slide is teaching you how to install the Unacademy app, which I think you all know. So you have to search Unacademy, or you can search Unacademy Learning app on the App Store or Play Store, and there you can install it for free. It's a free app, um, right? And you can use it for free. You can attend the special classes, and you can take up a few live tests as well. You can chat with your educator, and that's the main benefit, and that's make the Unacademy unique platform, right? And here at Unacademy we have the top educators of the top universities like AIMS and all, and they are having the teaching experience of around of more than 10 years. Why are this? Then here you have two choices. One is plus and second is iconic. So plus में you can access whole Unacademy. Iconic में you can access both Unacademy and Prep Ladder. So if you are a first, second, third year medical student, then I would suggest you to purchase this iconic subscription. So guys, plus course में सबसे पहले तो plus की बात करते हैं. So plus में you can attend the live classes, you can attend the live tests, quizzes, you can enroll yourself into batch courses, you get the structured schedule, plus you get the strategy of the educator, and yeah, that's the strategy to crack any exam, because they have already experienced that strategy and they are telling you the same. So that's why um, you can easily crack any of the exam. And now comes the iconic, that is the
collaboration of Unacademy and Prep Ladder. So here you can access whole Unacademy. So like in the plus additionally you get the video lectures. You get access to the Prep Ladder's video lectures, QBank 2.0, rapid revision course, and handwritten notes. And that's the main benefit of the Iconic. And if you're a first, second, and third year medical student, then I would prefer this course to you. And we have only 4 choices. You can buy Iconic for 12 month, 18 month, 24 month, and 36 months. And on buying, use the code Virmani and you will be getting 10% off. And plus may we have many choices. First is 1 month. You can buy it for 1 month. Basically you can test it for 1 month. If you are confused that should you buy or not, then just for the testing purpose you can buy it for 1 month. You can buy it for 3 month, 6 month, 12 month, 18 month, 24 month, and 36 month. And use code Virmani and you will be getting 10% discount on all the purchases, right? So here we are studying pharmacology and we are revising the drugs. So in the morning session we have already completed whole CNS morning, and the yesterday session we have already completed whole CNS, NS, and yesterday we have also completed antibiotics. So that these are the revising sessions. जो मेरे particular sessions हैं वो भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे फार्मैक इजी के नाम से. These are the revision sessions. तो इसमें हम फास्ट चलेंगे जो जैसे कि मैंने पहले कहा था. तो सो वी हैव डन रिवीजन. हमने किस किसी कर लिया. वी हैव कंप्लीटेड एंटीबायोटिक्स इन अराउंड 2.5 आवर्स. एंड अगर आप फार्मैक इजी में देखो तो वी हैव कंप्लीटेड इन अराउंड, मतलब काफ़ी सारे आवर्स में, बट वी हैव कंप्लीटेड द एंटीबायोटिक्स इन 12 to 13 classes. And each class will be around 1.5 to 2 hours. So sometimes that is not possible for you to utilize your 25 hours, and that's a difficult task. अगर आपने साथ में अटेंड नहीं करी, then these revisions are also for you. So antibiotics we have already completed. CNS we have already completed. Anti-epileptic, anti-Parkinsonism, and antipsychotic, anti-manic, antidepressants, bipolar disorder, and anti-anxiety, plus opioid analgesics. So we have already completed these many topics from yesterday and today. And let's see कल कौन सी रखते हैं. अभी तक शेड्यूल नहीं करी है. I have to plan the class right now and then we will doing that. First of all, peptic ulcer disease. So peptic ulcer disease. So your first of all physiological point of view. So first of all, your stomach is having a few aggressive agents, then it is having a few protective agents. ठीक है. So stomach के पास है दोनों चीज़ें हैं. The things that are damaging to the stomach वो भी है. Wait a second. Protective भी है and damaging भी है.
अब देखो, अगर प्रोटेक्टिव वाला कम हो गया तो डैमेज बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। अगर डैमेजिंग वाला बढ़ गया तो भी अल्टीमेटली डैमेज होगा, बट अगर प्रोटेक्टिव वाला बढ़ गया तो प्रोटेक्शन बनी रहेगी, ठीक है। सो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स आर बेसिकली म्यूकस, ग्रीन से लिखते हैं। Protective factor is a mucus, and the second thing is bicarbonate ions, ठीक है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। एंड जो डैमेजिंग फैक्टर है दैट इज HCl एंड H पाइल हो रहा है। सो ये दोनों चीज़ें दे कैन कॉज अल्सर, और ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर योर बॉडी इज डेफिशिएंट ऑफ दीज टू थिंग्स, तो अल्सर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बट देर आर कंडीशंस जब HCl बढ़ जाता है या H पाइलोरी की इन्फेक्शन हो जाती है, सो वो भी एक अनदर कॉज है जब अल्सर हो सकता है, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द वेट ट्रीटमेंट। हम ज़्यादा पैथोजेनेसिस नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग फार्माकोलॉजी। अगर पैथोलॉजी पढ़ रहे होते तो अच्छे से पढ़ लेते, पैथोजेनेसिस, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स एंड ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिक्रीज द HCl। पेप्टिक अल्सर हो गया, ठीक है। अब क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज द HCl। सो HCl इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैराइटल सेल ऑफ द स्टमक, यू ऑल नो दिस, राइट। And your HCl is basically released through the proton pump या by the proton pump। H plus K plus pump है और इससे रिलीज होता है, ठीक है। So your proton pump helps in the secretion of acid, and your proton pump is stimulated by acetylcholine, histamine and gastrin। acetylcholine, histamine एंड गैस्ट्रिन, ठीक है, हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन, राइट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है। सो अब क्या करना है? ये सब स्टिमुलेशन कर रहे हैं एसिड के प्रोडक्शन को प्रोटॉन पंप पे, ठीक है, प्रोटॉन पंप पे। सो प्रोटॉन पंप पे ये सब अपना स्टिमुलेशन दे रहे हैं और ये HCl प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन ब्लॉक दिस। सो 3 स्टिमुलेशंस मिलते हैं, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन, और एक इनहिबिशन भी होता है जो PGE2 से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से, ठीक है। सो दिस इज द इनहिबिटरी है और ये है स्टिमुलेटरी। सो नाउ हाउ द एसिड इज प्रोड्यूस्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल M1 और M3 का जो सिनेरियो है वो पढ़ते हैं बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है। सो here what is happening, सबसे पहले M1 पे आया, एक्टिवेशन हुआ, M1 स्टिमुलेट हुआ, ठीक है। M1 स्टिमुलेट होने के बाद एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलिन रिलीज होकर M3 को स्टिमुलेट करेगा एंड M3 फिर जाकर प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? M1 हुआ, ठीक है। M1 इज वेरी नेसेसरी। M1 पे स्टिमुलस नहीं आया होता तो फिर आगे का प्रोसेस नहीं होता। तो M1 पे स्टिमुलस हुआ, M1 ने एसिटाइलकोलिन रिलीज करा, देन दिस एसिटाइलकोलिन विल बी गोइंग टूवर्ड M3 एंड M3 के बाद जाएगा प्रोटॉन पंप पर, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में आ गया है इतना तो, right? So main thing is M1 here,
तो सबसे पहले ड्रग हम क्या देंगे, M1 ब्लॉकर. वी विल बी ट्राइंग टू गिव M1 ब्लॉकर, राइट, बिकॉज M1 पे ही ब्लॉक कर देंगे ना हम इसको, इसके आगे प्रोसेस ही नहीं चाहिए हमें, राइट. एंड सेकेंड थिंग जो कि होती है दैट इज, यहाँ देखो, it gets proton pump gets stimulation from your H2 और histamine as well, ठीक है, H2. तो हम H2 को भी ब्लॉक कर देंगे. फिर गैस्ट्रिन से भी इसको स्टिमुलस मिलता है, बट एज सच वी कैन नॉट एंटागोनाइज द गैस्ट्रिन. सो गैस्ट्रिन के पास, गैस्ट्रिन का ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है. नाउ जो हमने दो ट्रीटमेंट देख लिए. फर्स्ट इज हम M1 ब्लॉकर दे सकते हैं, सेकेंड इज हम H2 ब्लॉकर दे सकते हैं. एंड देन ये सब स्टिमुलस किस पे कर रहे हैं, प्रोटॉन पंप पे कर रहे हैं ना, प्रोटॉन पंप पे कर रहे हैं, राइट. प्रोटॉन पंप पर ये सब चल रहा है. तो अब हम डायरेक्टली प्रोटॉन पंप को ही ब्लॉक कर सकते हैं. Directly we can block the proton pump, right. ये चीज़ हमने पढ़ ली. तीन चीज़ें हमने, तीन मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट हमने देख लिए. आई होप आपको सबको समझ में आए होंगे. सबसे पहले वी कैन इनहिबिट M1 राइट अवे, M1 रिसेप्टर राइट अवे. पिरेंजापिन एंड टेलेंजापिन इज द ड्रग, M1 blocker. Then we can inhibit the H2 receptor, cimetidine and ranitidine, H2 blocker है ये. Then stimulate the PGE2 because PGE2 is a inhibitory factor. तो हम इसको inhibitory hormones को inhibitory को बढ़ा सकते हैं ताकि हम acid secretion को बंद कर दें. एंड इसके लिए वी कैन गिव मिसोप्रोस्टॉल, PGE2 एनालॉग, ठीक है, PGE2 एनालॉग. एंड अल्टीमेटली जो लास्ट सॉल्यूशन है, लास्ट ऑप्शन है. सो बेसिकली ये तीन यूज होती हैं. ये ज़्यादा वी डोंट यूज दिस हियर. ये ज़्यादातर यूट्रस वाले काम में यूज आती है. Last option to decrease the HCl is proton pump inhibitor. So we can directly inhibit the proton pump, right. We can directly inhibit the proton pump, ठीक है. I hope you all are understanding the things. Understanding the things. और अगर नहीं हो रहा then पूछ भी सकते हो. ठीक है. So first of all, M1 inhibitor, we have pirenzapine and telenzapine. Then H2 में cimetidine and ranitidine, that are the cheapest drugs that are present in the market, Rantac के नाम से and all, ठीक है. Then PGE2, misoprostol, PGE2 analog. Then proton pump inhibitors directly, omeprazole, pantoprazole and lansoprazole, and these are the drugs, right. So proton pump inhibitors are the most important group here, is the most important group here. So irreversible, so they are irreversible inhibitor and they exert systemic effect. So ये topical effect show नहीं करते, topical effect show नहीं करते. मेरा मतलब क्या है कहने का, यहाँ पे राइटल सेल है मान लो, इमेजिन कर लो, पीपीआई आपने दिया, इस पे गया, ये इसको इनहिबिट नहीं कर सकता, नहीं करेगा ये, बिकॉज ये खुद यहाँ एब्जॉर्ब होगा ही नहीं. ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होगा ये एब्जॉर्ब. पीपीआई जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होगा, ब्लड स्ट्रीम में आएगा. जब ये सिस्टेमिकली पीछे से आकर इसको अटैक करेगा,
सिस्टेमिकली, राइट, सिस्टेमिकली एक्ट करेगा, कैनॉट पोजेस लोकल एक्टिविटी और टॉपिकल एक्टिविटी, प्लस इट इज़ अ एसिड लेवाइल. अगर एसिडिक एनवायरनमेंट में चला गया देन इट कैन कॉज, देन ये डैमेज हो जाएगा और फर्दर हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो नहीं आएगा. ठीक है. सो इट कम्स विद द एंटरिक कोटिंग. सो ये एंटरिक कोटिंग सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाकर खुलेगी, नहीं खुलेगी ये स्टमक में. देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. सो सबसे पहले ये हिट एंड रन ड्रग है, हिट एंड रन ड्रग. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. हिट एंड रन ड्रग, हिट एंड रन ड्रग मतलब एक बार इसने टच कर दिया उसके बाद ये भाग जाएगा और वो परमानेंटली डैमेज रहेगा. प्रोटॉन पंप, एक बार जो प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो गया वो डैमेज रहेगा. फिर समझ पा रहे हो? आई होप एवरीथिंग इज फाइन. या सो नाउ दिस PPIs, let's discuss this, but wait a second. Let's move further and so PPIs. So PPIs, these are the prodrugs and they act irreversibly by inhibiting H plus K plus ATPase pump or the proton pump in the parietal cell. And the drug in this group include omeprazole, pantoprazole, esomeprazole, and lansoprazole and rabeprazole. These drugs are weak bases and can destroy by the gastric acid. And to protect them from the gastric acid, these are given as the enteric coated tablets. This coating dissolves in the alkaline medium in the intestine, small intestine, and then these prodrugs are absorbed. On reaching the parietal cell, active moiety and is formed and gets trapped, and these can inhibit both basal acid output as well as the meal stimulated output. So जो basal acid निकल रहा है ये उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस जो मील के टाइम पर निकला हुआ है हाई, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिक कंडीशन हो रही है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं. सो ये दोनों टाइप के आउटपुट्स को कंट्रोल करता है एंड दैट्स व्हाई इट इज बेनिफिशियल. Then PPIs are given orally in early morning empty stomach just before breakfast, and pantoprazole, esomeprazole and lansoprazole can be given through IV. These drugs have shorter T half-life but can inhibit the acid secretion for more than 24 hours, and these are also called as hit and run drug. They inhibit the proton pump irreversibly, right? PPIs are the drug of choice for the peptic ulcer disease due to any etiology. Even NSAID induced, maybe this is prescribed, right? And it is also used in GERD and the Zollinger-Ellison syndrome. So in सब में it is beneficial.
right? And for the prevention of the stress-induced gastric bleeding, H2 blockers are generally preferred over the PPIs. And wait a second. So, PPIs are quite safe drugs, and they have diarrhea, headache, abdominal pain as the adverse effects. And these have been shown to be carcinogenic in the rodent, but no such case has been reported in the humans. And in the patient with the nasoenteric tube, immediate release of omeprazole by nasogastric tube is currently preferred. So in the patients who are having nasoenteric tube, so immediate release of omeprazole by the nasogastric tube is currently preferred. And antacid, सो emergency जो पेनफुल कंडीशन हो रही है हाइपर एसिडिटी की वजह से, सो for that we have to give antacid. So these are the best emergency drug. Even PPIs, we have right now we have studied that PPI दोनों के दोनों एसिड आउटपुट को बंद कर सकता है, बट since PPI act systemically, so PPI जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक कॉन्सेंट्रेशन अटेन करेगा, फिर जाके वो एक्ट करेगा और टाइम लग जाएगा. सो बेस्ट एमरजेंसी treatment of the hyperacidic condition is antacid. Best emergency hyperacidic condition के लिए antacid is the best treatment. So they are fastest acting emergency pain relievers of the peptic ulcer disease, and these includes 2-ALOH3 aluminium hydroxide and magnesium hydroxide, which magnesium hydroxide is जनरली प्रेफर्ड, एंड जनरली इनका मिक्सचर भी प्रेफर्ड होता है, बिकॉज वन कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, सेकेंड वन कैन कॉज डायरिया, राइट? सो दैट्स वाई. और कॉन्स्टिपेशन में भी MgSO4 is used. MgSO4 orally is used because it can do diarrhea, and if the patient is already having constipation, then this can benefit the constipation. उसके बाद IV MgSO4 क्या करता है? IV MgSO4 is the drug of choice for eclampsia. बट वो IV की बात होती है, ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है. Then ulcer protectives are sucralfate and colloidal bismuth substrate. So ये क्या काम करते हैं? ये अल्सर प्रोटेक्टिव है, so ये अल्सर को कवर करेंगे. So sucralfate and colloidal bismuth substrate. So sucralfate act by polymerization and it requires acidic pH of 4. So ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? They require acidic pH, और जब acidic pH इनको मिल जाएगी ये पॉलीमराइज हो जाएंगे. पॉलीमराइज का मतलब ये अगर साइज इनका पहले इतना था ना, तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है? और they try to cover the ulcer अच्छे से, ठीक है? सो जब भी तो इनको हाइपर एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है, एंड दे शुड नेवर बी कंबाइंड विद द एंटासिड, बिकॉज एंटासिड में हमने कंबाइन कर दिए. एक तो अल्सर प्रोटेक्टिव्स, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में देनी पड़ती हैं, एंड इट इज़ नॉट वेरी इजी टू टेक दैम, राइट? पेशेंट को वैसे ही नोजिया एंड वॉमिटिंग होने लग जाएगी. देन अगर हमने एंटासिड के साथ दे दी, तो एंटासिड जो एसिडिक पीएच है उसको आइदर इट विल बी कन्वर्टेड टू न्यूट्रल और बेसिक, and polymerization will not happen, and your ulcer will not be protected by these substances, right? And the bismuth so a colloidal bismuth substrate can cause bismuth poisoning.
एक तो ज़्यादा अमाउंट में देते हैं, और अगर ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर सिस्टेमिकली देन इट कैन कॉज बिस्मथ पॉइजनिंग। बिस्मथ पॉइजनिंग का बी और बी दो बी पर इफेक्ट आता है बोन एंड ब्रेन। बोन पर इट कॉजेज ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी एंड ब्रेन पर इट कॉजेज एंसेफेलोपैथी। देन एच पाइलोराई ड्रग्स। एच पाइलोराई के लिए यू विल बी गिविंग एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. सो वन इज amoxicillin, metronidazole and clarithromycin. So these three drugs are very much useful to treat the H. pylori infection. And we are having the triple drug therapy, PPI, and two antimicrobial agent that are combined basically. So one is the preferred combination is clarithromycin, amoxicillin, and PPI. That is a cap, right? Then ulcer healing drug. These are not used now, but they were used earlier in the ancient time. Carbinaloxone is obtained from the roots of the licorice, and it causes epithelialization of the ulcer without decreasing the acidic production. And it can displace the aldosterone from the plasma protein binding site, and it results in the hypertension, sodium and water retention, and hypokalemia. तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अल्सर हीलिंग ड्रग क्या कर रही है, ये है कार्बेनोलॉक्सोन. एंड व्हाट इज इट डूइंग, ये अल्सर के ऊपर इसने एपिथीलियम फॉर्म कर दिया एपिथीलियम, ठीक है, एपिथीलियम फॉर्म कर चुका है ये, ठीक है, एपिथीलियम फॉर्म कर दिया इसने. एंड एपिथेलाइजेशन ऑफ द अल्सर इज डन. तो ये अब फर्दर जो एसिड है इसको डैमेज नहीं पहुंचा सकता इस अल्सर को. बट फर्दर कार्बेनोलॉक्सोन कैन कॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एल्डोस्टेरॉन, एंड it can cause hypertension, sodium water retention and hypokalemia. तो ये चीज़ तो आपको याद ही होगी कि Na+ जब बॉडी में बढ़ेगा तो Na+ और K+ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो K+ बॉडी से कम हो जाएगा, राइट. ये किडनी के ऊपर डिपेंड करता है. तो किडनी Na+ को एब्जॉर्ब करेगी, K+ को बाहर फेंकेगी, ठीक है. ये चीज़ हमेशा याद रखना. Now this is the anti-H. pylori regimes. So PPIs तो देना ही है. PPIs you can give omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabeprazole, ठीक है. Plus you have 1 week therapy twice daily, and you have 2 weeks therapy twice daily. So 1 week therapy अगर आप दोगे, then if you are combining amoxicillin with the clarithromycin, that is preferred, then 1 gram of amoxicillin is you have to give 1 gram of amoxicillin, and clarithromycin 500 mg, and with the PPI, ठीक है. एंड PPI के साथ अगर आप क्लेरिथ्रोमाइसिन दे रहे हो, देन क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल दे रहे हो, देन 250 mg ऑफ क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड 400 mg और 500 mg ऑफ मेट्रोनिडाजोल. एंड अगर आप एमॉक्सिसिलिन के साथ मेट्रोनिडाजोल दे रहे हो, देन एमॉक्सिसिलिन की क्वांटिटी वही 1 ग्राम ही रहेगी, राइट, दोनों के साथ. क्लेरिथ्रोमाइसिन चेंज होगा. क्लेरिथ्रोमाइसिन एमॉक्सिसिलिन के साथ 500 होगा, मेट्रोनिडाजोल के साथ 250 होगा. देन ट्वाइस डेली थेरेपी 2 वीक्स के लिए अगर दोगे, देन 750 mg ऑफ एमॉक्सिसिलिन विद 400 mg सेम, एंड 750 mg विद 500 mg ऑफ क्लेरिथ्रोमाइसिन. एंड यहाँ पर भी क्लेरिथ्रोमाइसिन की 50% या 250 हो गई मेट्रोनिडाजोल के साथ. सो या ठीक है. कैप इज जनरली प्रेफर्ड क्लेरिथ्रोमाइसिन ऑफ 500 mg, amoxicillin of 1 gram or 1000 mg, and one of PPI, pantoprazole or omeprazole, right. And anti-emetic drugs. So now we have completed the peptic ulcer,
disease. Peptic ulcer disease. So first is vomiting or emesis. So vomiting occurs due to the stimulation of the vomiting center in the lateral medullary reticular formation, right? Vomiting center. So जब ये भी stimulate होगा तब vomiting होगी. Then it receives the input from the GI mucosa. अगर GI mucosa में कुछ irritant है तो भी ये vomiting center को जाके stimulate कर देगा. And CTZ स्टिमुलेट होगा तो अल्टीमेटली वॉमिटिंग नोजिया होगा. ये सबको पता है. वेस्टिबुलर एपरेटस में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो भी वॉमिटिंग सेंटर या नोजिएटिंग वॉमिटिंग सेंटर होगा और पेशेंट विल बी फीलिंग नोजिया. ठीक है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल इरिटेशन ऑफ द GI mucosa by the drugs or irritants lead to the release of the serotonin that will be stimulating the vomiting center at 5-HT3 receptors. ठीक है. CTZ is rich in dopamine and serotonin and neurokinin receptor. CTZ is rich in dopamine, serotonin and neurokinin receptor. So CTZ जाते ही CTZ जब भी स्टिमुलेट होगा तब ये सेरोटोनिन निकलेगा और ये सेरोटोनिन जाके वॉमिटिंग सेंटर पे एक्ट करेगा और या nausea and vomiting cause करेगा. Then motion sickness occurs due to the stimulation of the vestibular apparatus and cerebellum. Motion sickness occurs due to the stimulation of the vestibular apparatus and cerebellum and ये भी यही चीज़ करेगा और nausea and vomiting cause करेगा. Mainly nausea. These structures result in the stimulation of the vomiting by M1 and H1 receptors. And by stimulation of the H1 receptor, histamine plays a permissive role in all type of vomiting. So histamine also pays, serotonin also pays, right? So first of all anticholinergics की बात करते हैं. So anticholinergics में hyoscine is the best drug that is antiemetic. Then H1 blockers, doxylamine, and this is the drug of choice for morning sickness. So I am talking about here morning sickness due to HCG in the first trimester, right? Then 5-HT3 blockers, ondansetron, granisetron, tropisetron, pelanositron. So these are the 4 drugs, setron, and these are serotonergic blockers. And these are the drug of choice for the chemotherapy induced vomiting, radiotherapy induced vomiting, post operative vomiting. क्या क्या ondansetron किस किस के लिए है? कीमोथेरेपी induced vomiting and radiotherapy induced vomiting, post operative vomiting, right? And now neurokinin antagonist, substance P antagonist. So aprepitant, netopitant, rolapitant. So जो pitant वाली drugs हैं, they are neurokinin antagonists, and these are the drug of choice for the delayed vomiting by cisplatin. Delayed vomiting by cisplatin or delayed vomiting due to chemotherapy. Delayed vomiting due to chemotherapy. ठीक है. और इमीडिएट के लिए क्या ondansetron यूज कर रहे थे. ठीक है. कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड इमीडिएट वॉमिटिंग ondansetron, और डिलेड के लिए कौन सी ड्रग है? एप्रेपिटेंट या नेटोपिटेंट, राइट? So now D2 antagonist. D2 antagonist. So we are having two, metoclopramide and domperidone. Metoclopramide and domperidone. So first of all, metoclopramide, it can cross blood-brain barrier. So CNS symptoms दिखेंगे इसके अंदर. CNS symptoms will be positive. साफ साफ पता चल रहा है. Because it can cross the blood-brain barrier, then the CNS symptoms will be positive. Domperidone cannot cross the blood-brain barrier.
So CNS symptoms will not be there. ठीक है, will not be there. Then metoclopramide can cause dystonias and extrapyramidal symptoms, like I have said now, central nervous system symptoms. And domperidone cannot cause these dystonias and all extrapyramidal symptoms, right? And thus metoclopramide जो है ये पार्किंसोनियन सिम्टम्स को वर्सन कर सकता है. इट कैन वर्सन द पार्किंसोनिज्म सिम्टम्स. एंड ये वाला जो है इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लीवोडोपा इंड्यूस वॉमिटिंग. एंड ये पार्किंसोनिज्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करता. सो इट इज़ सेफर इन द पेशेंट्स हैविंग पार्किंसंस डिजीज, राइट. एंड अदर एक्शन की अगर बात करें तो मेटोक्लोप्रोमाइड ब्लॉक्स द 5-HT3 एंड इट स्टिमुलेट्स द 5-HT4 रिसेप्टर्स. एंड डोमपेरिडोन का कोई अदर एक्शन नहीं होता. So main difference is that metoclopramide can worsen the Parkinson symptom and domperidone cannot worsen them, right? Domperidone नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी. And drugs for the motion sickness. Where is my pen? So hyoscine is used as anticholinergic is used as IM injection or the transdermal patch that is applied behind pinna for the prophylaxis of the motion sickness, and it has no role in the treatment once the vomiting start. So hyoscine can prevent the vomiting, but it cannot stop the vomiting if the vomiting has already started. So vomiting start होने के बाद हम नहीं दे सकते ये drug, because एक बार start हो गई then it cannot control the vomiting, right? control नहीं कर सकता है ये. समझ रहे हो बात? Antihistaminics like promethazine, diphenhydramine, cyclizine, maclinizine, they can be used for prophylaxis. And cinnarizine, that is an antihistaminic and anticholinergic and anti-serotonergic drug. So cinnarizine तीन तरीके से एक्ट करती है. It is antihistaminic, anticholinergic and it is a anti-serotonergic drug, right? Anti-serotonergic drug. And it is used for the treatment of vertigo. Vestibular apparatus की वजह से अगर problem है then cinnarizine is used for the drug for vertigo, right? Then morning sickness के लिए doxylamine is the drug, antihistaminic. With we can give vitamin B6 as well, pyridoxine, in the high dose, and this is the safest antiemetic drug in the first trimester. And D2 blockers, although effective, should not be used due to their teratogenergic potential. So metoclopramide and domperidone cannot or should not be used because they are having teratogenic potential. Then the drugs for the chemotherapy and the radiotherapy or radiation, so the drugs that causes, wait a second, yeah. So the drugs for the chemotherapy and the radiation therapy induced vomiting. Five HT3 blockers like ondansetron, granisetron, dolasetron, pelenossetron and ramosetron are drug of choice for this condition. Pelenossetron is most potent 5-HT3 blocker and dolasetron may prolong QT interval. Pelenossetron has longest T half-life, whereas ondansetron has shortest T half. Efficacy of these drugs increase if used along with the antihistaminics and D2 blockers or dexamethasone. These drugs are also effective in hyperemesis of pregnancy and post-operative nausea. D2 blockers like metoclopramide and domperidone can also be used
here. And vomiting due to cisplatin, most hematogenic anti-cancer drug is the cisplatin. And vomiting due to cisplatin can occur within 24 hours and it may be delayed after 2 days. And drug of choice for the immediate vomiting is ondansetron, that is a 5-HT3 blocker. And if there is a delayed vomiting, then aprepitant, that is a substance P antagonist. And palanositron may also be effective in the delayed MSs here. Then aprepitant is a highly selective NK1 receptor antagonist and orally active, and they enter the brain and it is metabolized by CYP3A4 enzyme and can also inhibit the metabolism of the drug metabolized by this enzyme. Example, warfarin. And fosaprepitant is an IV prodrug of aprepitant. And netipetant is a newer NK1 antagonist approved for the chemotherapy-induced vomiting, both acute and delayed in the condition with the palanositron. So in this we have discussed the drugs for the chemotherapy and the radiation therapy-induced vomiting, and we have also discussed the immediate drug that should be used and the delayed drug that should be used, right? So yeah, now GERD, gastroesophageal reflux disease. So it is a condition in which acid in the stomach reaches the esophagus and causes mucosal inflammation. So it is a condition in which acid in the stomach it it reaches the esophagus and causes the mucosal inflammation. So reflux हो रहा है, and this reflux is due to the decrease in the tone of the lower esophageal sphincter. राइट. सो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जो टोन है वो डिक्रीज हो जाती है और तभी ईसोफेगस से वो एसिड जो स्टमक से ईसोफेगस तक आ जाता है, एंड समटाइम्स इट कम्स upward and in the mouth as well, and it can cause teeth discoloration as well. So two strategies for the management of this condition are either to decrease the acid production or to increase the forward movement of the GIT so that the content do not reflux upwards. And the drugs used for the increasing the GI motility are known as prokinetic drugs. These drugs can also be used for the treatment of the gastroparesis, post-operative paralytic ileus and constipation. Prokinetic drugs. ACH is the main excitatory neurotransmitter in the GIT, and cholinergic neurons contain excitatory as well as inhibitory presynaptic receptors. Thus, D2 and 5-HT3 antagonist and 5-HT4 agonist will increase the release of acetylcholine and stimulate the GI motility. So ये चीज़ समझते हैं. प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या होती हैं? प्रोकाइनेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि मोटिलिटी को बढ़ा रही हैं, मोटिलिटी को बढ़ा रही हैं. ठीक है. एसिटाइलकोलिन इज द मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द जीआईटी. सो पैरासिम्पथेटिक स्टेट के अंदर हमारा जीआईटी एक्टिवेटेड रहता है. सो एसिटाइलकोलिन इज द मेन एक्साइटेटरी और ये पैरासिम्पथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये बढ़ाएगा. Cholinergic neuron contain excitatory 5-HT4 as well as inhibitory 5-HT3 D2 presynaptic receptors. So here हमें क्या करना है? हमें 5-HT4 को प्रमोट करना है और 5-HT3 और D2 को ब्लॉक करना है. So अब हमें ऐसी एक ड्रग पता है. So thus D2 and 5-HT3 antagonist and 5-HT4 agonist will increase the release of the ACH and stimulate the GI motility. I hope ये चीज़ समझ में आ गई होगी. नहीं आई तो प्लीज़ आस्क इन द लाइव चैट. So metoclopramide is the drug, and it possesses a central as well as peripheral D2 blocking action, and central D2 blocking action is responsible for its antiemetic activity. So peripheral D2 blocking की वजह से it is a prokinetic agent, plus it is having a agonistic action of 5-HT4 receptor and it is having an antagonistic action of 5-HT3 receptor. So this makes the metoclopramide a prokinetic agent. A prokinetic agent. I hope I made myself clear and you all have understood the things.
Domperidone. Domperidone is a D2 receptor antagonist and it cannot cross the blood-brain barrier, and it is mainly used as an antiemetic. It is less efficacious than metoclopramide, and it is devoid of extrapyramidal and hyperprolactinemic adverse effects, or EPS, extrapyramidal symptoms, and it decreases the levodopa-induced vomiting without interfering with its efficacy and without interfering any पार्किंसन सिम्टम्स और कोई सिम्टोमेटिक इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है. देन 5-HT4 एगोनिस्ट, सिसाप्राइड, मोजाप्राइड, रेंजाप्राइड, so these are the drugs that are 5-HT4 antagonist, 5-HT4 agonist drug, and with no action on the D2 receptor. So D2 receptor पे नहीं है तो कोई भी एमेटिक एंटी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी. These drugs increase whole GI motility including the colon. Cisapride was previously used for the treatment of GERD, but it has been withdrawn in some countries due to its QT prolonging action. QT prolonging action क्या cause कर सकता है? Cause कर सकता है Torsades d pointes, Torsades d pointes, d pointes, ठीक है. And it is metabolized by CYP3A4 and therefore should not be administered with the microsomal enzyme inhibitors like ketoconazole and erythromycin, and increased chances of the Torsades d pointes and arrhythmia with QT prolongation. Yeah, we have already discussed this. Mosapride and Renzapride do not prolong the QT interval, so that's why they are having one benefit over Cisapride. Tegaserod can be used for the constipation dominant irritable bowel syndrome. Tegaserod. However, recently it has also been withdrawn from India, and due to the increased incidence of the MI and stroke. Other prokinetic drugs: levosulpiride, L-isomer of the sulpiride, an antipsychotic drug, is a newer D2 blocker having prokinetic activity. Loxyglumide is CCK1 receptor antagonist indicated for constipation dominant IBS. Macrolide like erythromycin are motilin agonist, and erythromycin is indicated in the diabetic gastroparesis, and rapid development of the tolerance limits this use, right? And now comes the anti-diarrheal drugs. So we have discussed the prokinetic drugs, we have discussed the peptic ulcer disease, we have discussed the antiemetic drugs, we have discussed the prokinetic and the GERD treatment, and now anti-diarrheal drugs. So सबसे पहले ORS. ORS contains NaCl, KCl, trisodium citrate and glucose, ठीक है. एंड सबसे पहले तो ORS किस लिए ज़रूरी है? इट रिप्लेनिश द इलेक्ट्रोलाइट, एंड और इसके अंदर ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज सबसे पहले तो हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने से पहले इट एड्स द Na एब्जॉर्प्शन, बिकॉज जो आपके सोडियम चैनल्स होते हैं ना, वो ग्लूकोज मीडिएटेड होते हैं. सो जो ग्लूकोज ये दे रहे हैं, अगर MCQ में आया कि ग्लूकोज इज गिवन टू मेंटेन द और टू ट्रीट द हाइपोग्लाइसीमिया, नो, इट इज़ यूज टू ट्रीट और इट इज़ यूज टू इंक्रीज द Na एब्जॉर्प्शन, ठीक है. एंड ट्राइसोडियम सिट्रेट इज यूज टू बिकॉज इट प्रिवेंट्स द acidosis, right? Then antimicrobials for the infection. So metronidazole for amoebic infection or amoebic dysentery, and ciprofloxacin for the bacterial dysentery, and combined usage is irrational. So metronidazole is given for amoebic dysentery, ciprofloxacin is given for the bacterial dysentery, and non-infective diarrhea के लिए loperamide and diphenoxylate, that will be decreasing the intestinal motility, because non-infective diarrhea के अंदर है. ये चीज़ हमने सुबह opioids में डिस्कस करी थी. Then they are contraindicated in infective diarrhea. अगर दे दिया then sepsis हो जाएगा, shock हो जाएगा, और patient will go into the septic shock, and we have already discussed these things and we will not repeat that. Then secretory diarrhea के अंदर you will be giving octreotide, and ये मैंने अपने प्लस कोर्स में डिस्कस करा है. जो हमने एंडोक्राइन ड्रग्स पढ़ी थी, ऑक्रियोटाइड अच्छे से डिस्कस करा था, सोमैटोस्टेटिन, ऑक्रियोटाइड एंड इसके इंडिकेशंस. सो ऑक्रियोटाइड is a somatostatin analog, and it is 40 times more potent than somatostatin, and it is the drug of choice for the esophageal varices as well, and it is useful in the secretory diarrhea because it decreases the secretion, and सबके secretions decrease करता है octreotide. And rescadotril is another drug, ये enkephalin inhibitor है, and enkephalin
एनकेफिलिन्स आर एंडोजिनस ओपियोइड एंड ये एनकेफिलिन एज का इनहिबिटर है. सो ये एनकेफिलिन्स बढ़ेंगे, एंडोजिनस ओपियोइड बढ़ेगा. एंड ओपियोइड का बच्चे को अब फंक्शन पता है या साइड इफेक्ट पता है, कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन. सो एनकेफिलिनेज ब्लॉक करेगा रिकैडोट्रिल और रेस्कैडोट्रिल. सो ये एनकेफिलिनेज को ब्लॉक करेगा. एनकेफिलिनेज ब्लॉक करेगा तो एनकेफिलिन्स बढ़ेंगे बॉडी के अंदर, दैट आर एंडोजिनस ओपियोइड. एंडोजिनस ओपियोइड बच्चे को पता है कि कॉन्स्टिपेशन करेगा. और अगर डायरिया है देन दे वुड बी यूजफुल बिकॉज ये डायरिया और कॉन्स्टिपेशन एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देंगे. देन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज, इसकी हमने ट्रीटमेंट अच्छे से देखा है. तो एक बार मैं फटाफट से बस ड्रग्स बताऊंगा और बस फिर यहाँ से अगली स्लाइड पर चलेंगे. So here 5 ASA derivatives is the drug of choice: sulfasalazine, olsalazine, mesalamine. Then steroids are useful if ulcerative colitis is not responding to the 5 ASA derivatives. Then Crohn's disease में steroid is the drug of choice. सबसे पहले steroid देनी है. Then TNF alpha, adalimumab, sertolizumab, etanercept and infliximab and cetrolizumab. So these are the drugs, TNF alpha. And now laxative and purgatives. So now we came to the treatment of constipation. Laxative and purgative. Laxative causes semi-solid and semi-solid stools, and purgative causes watery stools, and purgative are the strong laxatives. ठीक है. Uses. First is functional constipation. Functional constipation मतलब not, so they are not for the obstructive constipation. Functional constipation मतलब कि constipation, so सबसे पहले तो डाइट में इम्प्रूवमेंट करो. प्रेफरेबली इट शुड बी ट्रीटेड विद अ हाई फाइबर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, राइट. देन व्हेन द पेशेंट इज हैविंग पाइल्स, हेमोरॉइड्स, हर्निया और एनल फिशर, तब वी वांट कि स्ट्रेन ना करे, वो प्रेशर ना डाले. और प्रेशर ना डाले देन हम उसको लैक्टुलोज देंगे या फिर यही लैक्सेटिव पर्गेटिव्स देंगे, और ताकि सॉफ्ट स्टूल्स निकले और ज़्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े. नाउ एक्सरेज of KUBs, and the fourth indication is along with the anti-helminthic drugs, because anti-helminthics तो जो भी हेलमेंट्स हैं, प्रोटोजोआस है, उन सबको मार देगी और लैक्सेटिव देने से वो इजीली बाहर आ जाएंगे, राइट. नाउ कम्स द बल्क फॉर्मिंग drugs, bulk forming substances. So they should be given with a plenty of water, राइट. अगर नहीं देंगे तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं. डाइट्री फाइबर, मिथाइल सेलुलोज, बट इतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि सेफर सब्सटेंसेस हैं. डाइट्री फाइबर एंड मिथाइल सेलुलोज, एंड दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन मेगा कॉलोन, राइट. देन सेकेंड, ऑस्मोटिक पर्गेटिव्स. ऑस्मोटिक पर्गेटिव्स कैसे काम करते हैं? सो दीज आर सेलाइन पर्गेटिव्स, MgSO4 एंड MgOH2, and these are contraindicated in the chronic renal failure. Then osmotic purgative we have lactulose and polyethylene glycol. So ये कैसे काम करते हैं? GIT में they absorb more water and easily excrete, easily digest हो जाता है सब कुछ, ठीक है. Then stool softeners मतलब they will be decreasing the surface tension of the fluids in the GIT. And docosate is the drug, dioctyl sodium sulfosuccinate. Then stimulant purgative मतलब they will be the irritants होंगे जो कि पेरिस्टालसिस को बढ़ाएंगे. एंड ऑर्गेनिक हो सकते हैं या एंथ्राक्विनॉन्स या कैस्टर ऑयल. सो ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेंट हैं. बिसाकोडाइल, Na-picosulfate, एंड दीज आर एंड इसका साइड इफेक्ट इज ऑन द कॉलोनिक आर्टरी स्टेनोसिस. देन एंथ्राक्विनॉन्स में सेना एंड कैस्केरा, इट कैन कॉज मेलेनोसिस कोलाई. And castor oil is also a stimulant or a irritant. So stimulant purgatives are contraindicated in the obstructive constipation because वो फिर चीर फाड़ सकता है चीज़ों को. Then now we
are here, and we will be discussing the newer drugs for the constipation. So ये अच्छे से समझना, because ये काफ़ी ज़्यादा important चीज़ है. So chloride channel activators. So chloride channel activators will release the chloride in lumen. With chloride Na plus also देखो क्लोराइड ल्यूमेन में आएगा, क्लोराइड के साथ Na तो आएगा तो NaCl दोनों के दोनों बाहर आ गए ल्यूमेन में आए तो ल्यूमेन में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बढ़ गया. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगर बढ़ गया तो जो आसपास का जो वाटर है वो भी यहाँ आ जाएगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द ल्यूमेन, एंड दस इट मेक्स द स्टूल सॉफ्ट. कितना सिंपल सा है ये. एंड डायरेक्ट क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर इज लुबिप्रिस्टोन डायरेक्टली क्लोराइड को बढ़ा देगा लुमेन में. क्लोराइड बढ़ेगा तो सोडियम आएगा, सोडियम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बढ़ जाएगा ल्यूमेन में, वाटर को आना पड़ेगा, आसपास से पानी जो है वो सारा आ जाएगा ल्यूमेन में, और इजीली ये स्टूल को सॉफ्ट कर देगा और बाहर निकल जाएगा. ठीक है. एंड द ड्रग इज लुबिप्रिस्टोन. साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन इज डिहाइड्रेशन, बिकॉज आसपास का पानी अट्रैक्ट कर रहा है. देन वी हैव NHE इनिबिटर. NHE इनिबिटर क्या है? NHE इनिबिटर के अंदर द ड्रग इज ट्रेनापेनोर एंड इट इनिबिट्स द एक्सचेंज ऑफ द सोडियम एंड हाइड्रोजन. सो व्हेन एडमिनिस्टर्ड थ्रू द ओरल रूट, जो भी चैनल्स होंगे सोडियम के उसको बंद कर देगा ये. तो सोडियम जो है वो ल्यूमेन में ही रहेगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ल्यूमेन में रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बढ़ा तो एज यू नो कि सोडियम विल अट्रैक्ट द वाटर, सारा का सारा पानी सोडियम के पास आ जाएगा एंड स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा. राइट. एंड इसका भी साइड इफेक्ट विल बी डिहाइड्रेशन. ठीक है. नाउ कम्स द पेरिफेरल ओपियोइड एंटागोनिस्ट. सो एल्वीमोपैन, मिथाइल नाइट्रोक्सोन, नैलोक्सेगोल एंड नैलडेमेडिन. सो ओपियोइड क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन करते हैं, और ओपियोइड एंटागोनिस्ट कॉन्स्टिपेशन को ब्लॉक करेंगे. एज सिंपल एज दैट. सो पेरिफेरल ओपियोइड एंटागोनिस्ट हो गए, एंड दीज आर इंडिकेटेड फॉर द ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन. And with this we think that we have completed the GIT drugs. Let's see. So first of all हमने पढ़ा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हमने देखा कि HCl कैसे डिक्रीज करना है. सो हमने M1 ब्लॉकर्स दिए, H2 ब्लॉकर्स दिए एंड प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स दिए. ठीक है. सो प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा कि कैसे वो हिट एंड रन ड्रग्स हैं, कैसे वो एसिड लिबाइल हैं, और कैसे वो लोकल एक्टिविटी शो नहीं करते, एंड उसके इंडिकेशंस देखे. देन एंटासिड्स के बारे में बात करी. देन अल्सर प्रोटेक्टिव सक्रेल्फेट एंड कोलॉइडल बिस्मथ सब्सट्रेट के बारे में बात करी. देन हमने एंटी एच पाइलोराई ड्रग्स के बारे में बात करी. देन हमने अल्सर हीलिंग ड्रग जो कि पहले यूज़ होती थी कार्बेनोलॉक्सोन के बारे में बात करी. देन हमने एंटी एच पाइलोराई रिजीम्स के बारे में बात करी और प्रेफर्ड ड्रग्स देखी. फिर एंटी एमेटिक ड्रग्स में हमने पहले एंटीकोलिनर्जिक H1 ब्लॉकर, देन 5-HT3 ब्लॉकर, ऑन्डेंसेट्रॉन, एप्रेपिटेंट और D2 एंटागोनिस्ट मेटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन के बारे में सब में अच्छे से पढ़ा. देन ड्रग्स फॉर द मोशन सिकनेस पढ़ी, मॉर्निंग सिकनेस पढ़ी, ड्रग्स फॉर कीमोथेरेपी पढ़ी, इमीडिएट वॉमिटिंग के बारे में पढ़ी, इमीडिएट वॉमिटिंग दैट इज इंड्यूस्ड बाय कीमोथेरेपी एंड डिलेड वॉमिटिंग दैट इज इंड्यूस्ड बाय कीमोथेरेपी. सबका ट्रीटमेंट देखा. फिर GERD के बारे में बात करा. GERD में हमने ट्रीटमेंट देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल HCl डिक्रीज करेंगे, देन हम प्रोकाइनेटिक ड्रग्स देंगे ताकि फटाफट से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती रहे. गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होने के लिए हमने देखा कि एक ऐसी ड्रग जो 5-HT4 को बढ़ाए और 5-HT3 को ब्लॉक करे, ऐसी ड्रग इज मेटाक्लोप्रोमाइड. देन फिर हमने 5-HT4 एगोनिस्ट के बारे में बात करी, एंड हमने कुछ और प्रोकाइनेटिक ड्रग्स के बारे में देखा. देन एंटी डायरियल ड्रग्स में ORS देखी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देखे. देन नॉन इन्फेक्टिव डायरिया के लिए हमने ट्रीटमेंट देखा, लोपेरामाइड एंड ऑल. सिक्रेटरी डायरिया में देखा ऑक्रियोटाइड एंड रिकार्डोट्रिल देखा. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज देखी. देन कॉन्स्टिपेशन पे आ गए. कॉन्स्टिपेशन पे हमने सबसे पहले तो इंडिकेशंस देखी कि कॉन्स्टिपेशन में इंडिकेशन क्या क्या होनी चाहिए जब हम ये देंगे. देन हमने इसके अंदर बल्क फॉर्मिंग, ऑस्मोटिक परगेटिव्स, स्टूल सॉफ्टनर्स, स्टिमुलेंट परगेटिव्स के बारे में बात करी.
एंड देन हमने न्यूअर ड्रग्स में क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स के बारे में बात करी, NHE3 इनहिबिटर्स के बारे में बात करी, एंड पेरिफेरल ओपियोइड एंटागोनिस्ट के बारे में बात करी. And I think that let's end this session here, and and I'll be meeting you soon. Bye guys, take care, stay safe, stay healthy, stay positive, and keep fighting for your goals.